students, today start with new chapter, and the chapter called as the particularly reproduction in plant. It is a very important part of the botany. That is the first paper of biology. It is very important. That is the reproduction in plants. Okay, also called as the reproduction in angiosperm. Okay, in NCERT it include that means reproduction in organism. So that means particularly there are particularly or that is a part of that is a NCERT reproduction in flowering plant. So I'll draw here, that means I'll write here, that means reproduction in plants according to that is a HSC, और मैं इसको ही बोलता हूँ that is a reproduction in angiosperm. That means angiosperm, it is a division, it is a group. Okay, और particularly यहाँ पर अपने को मिलेंगे बहुत ज्यादा plants. Okay, and particularly according to NCERT that is called as the reproduction in flowering plants. So that means it is a very important part of the that means point of view your HSC examination. It is a lot of weightage here. That means so many questions asking this unit. Okay, here reproduction means particularly reproduction, you know about the reproduction तुम लोगों ने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा इसके बारे में. ओके, एंड पर्टिकुलरली 10th में भी पढ़ा होगा. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हो तुम लोग, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी बोल सकते हो. ओके, बट योर एनसीईआरटी बुक सेज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ऑल्सो in NCERT there are present reproduction in organism. So that means there are reproduction in organism, there are present some part of the botany and some part of the zoology. That means which type of mode of reproduction, sexual particularly and sexual. तो ये वहाँ पर दिया गया है, that is a reproduction in organism. Here what is exactly reproduction in plant? Okay, so here I'll just write here that is a like begets like begets like. This is the phrase फासेस. ये अभी बोलेगा, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ क्या है कि लाइक बिगेट्स लाइक, कि एक लाइफ से ही लाइफ शुरुआत होती है. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली लाइक बिगेट लाइक्स. ओके, व्हाट इज द definition of the particularly that reproduction? That means particularly reproduction, it is a biological process of an organism. It is a biological process of an organism. They produce offspring similar to itself. Okay, so that means particularly biological process ऐसी एक process है, they produce their progeny, यानी कि उनके तरह दिखने वाले ही animal. Okay, so that means it is called as the reproduction, and reproduction it is a biological process. Very important, I'll tell you first thing, that is a like begets like also. Okay, that means how reproduction are occur. Okay, there are types of reproduction. That is a very important phenomena, that is called as the types of reproduction. That is a type of reproduction. It is, there are two types of reproduction. That is the first called as the asexual reproduction. ओके, ये कैसे दिया गया है पर्टिकुलरली कि जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज अ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट. Another, that is a sexual reproduction. Very important here. This type of reproduction and this type of reproduction, there are two types of reproduction. और particularly अपन बात करते हैं first reproduction, that is a asexual reproduction. Here very important, that means particularly it is a part of that is a reproduction, that is a asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction, that means involving only one parent. Okay, and sexual reproduction means involving two parents. Okay, so that means particularly here asexual reproduction. First discuss about the asexual reproduction. Okay, asexual reproduction means particularly says, that means particularly it is simpler organism. Very important, it is a simpler organism. It is simpler organism. I tell you about the particularly first, that is a asexual reproduction. I'll erase here
sexual reproduction, because types of reproduction, it is a two types of, one is asexual reproduction and another is sexual reproduction. Okay, so first tell you about the particularly, that is a simple asexual reproduction. Asexual reproduction, it is seen in, that is a simpler organism. Okay, offspring, that means very important here, offspring produced by single parent, okay, or a involvement of their single parent in asexual mode of reproduction. Then particularly simpler organism है, okay, there are present particularly with or without gamete formation, very important, with or without gamete formation. Okay, that means particularly here some clones मिलेंगे अपने को in asexual reproduction में, that is the morphologically and genetically they are similar. Okay, clones मिलेंगे, तो that means particularly morphologically, okay, morphologically and genetically, that is a genetically similar, very important. Okay, this is a exactly colon means particularly वो अपने parent जैसे ही दिखेंगे. Okay, in the asexual reproduction there are very important, okay, no variation, okay, no variation, no recombination, okay, no recombination, और इवोल्यूशन में यहाँ पर ज्यादा फायदा भी नहीं होगा, तो दैट इज इवोल्यूशन में यहाँ पर ज्यादा फायदा भी नहीं होगा, तो दैट इज नो इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का यहाँ ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये ध्यान में रखो. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स मीन्स इट इज सीन इन पर्टिकुलरली सिंपलर ऑर्गेनिज्म. Okay, it is particularly offspring produced by single parent, that means involvement of single parent, and they produce प्रोजेनी. प्रोजेनी मीन्स वो अपने जैसे यानी कि उनके पेरेंट जैसे दिखने वाले ही कुछ ऑर्गेनिज्म बनेंगे या कुछ बॉडीज बनेंगी. ओके, ऑल्सो विथ और विदाउट गमेट फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर गमेट भी मिल सकता है और गमेट नहीं भी मिल सकता है, तो दैट इज अ विथ और विदाउट गमेट फॉर्मेशन. क्लोन्स, ओके, क्लोन्स दैट मीन्स एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट. Okay, so that means particularly morphologically and genetically similar animals. Then particularly here no variation, here is no change, change मिलेगा ही नहीं. Okay, no recombination, सवाल ही नहीं उठेगा, variation नहीं तो no recombination, and evolution से यहाँ पर ज्यादा फायदा नहीं होगा. Okay, okay, now start with, that is modes of asexual reproduction. Okay, I'll draw here, that is modes of asexual reproduction. That is the modes of asexual reproduction. First, that is a budding. Okay, it is very important. Budding or a particularly first is, that is a budding or a particularly, chalo I'll draw here first, that is a first tell you, that is about the, that is a fission or a binary fission. Okay, that is a binary fission. Then I tell you about the budding. Okay, first is, that is a binary fission, and binary fission it is seen in particularly, that is example here I'll give you, that is a example amoeba. Okay, and that is also paramecium. Okay, there are two examples, that is a amoeba and paramecium. Here I'll draw here one diagram, that means particularly it is a asexual reproduction or asexual reproduction type. So that means it is very important, because this is amoeba, because no shape of amoeba, so this is amoeba and then nucleus of the amoeba. Okay, here first is, that means particularly this nucleus, it is a divided or a particularly first, that is this nucleus or this amoeba, this nucleus it is a enlarge. First take, that is a nucleus, that is a enlarge. Okay, and particularly here then there are, it is divided into particularly two group. Okay, so that means particularly here form the cleavage.
Okay, first that is a enlarge, then particularly it is a cleavage. There are occur cleavage, and particularly it is dividing into two amoeba. Okay, that means there is no shape of amoeba. There is no shape of amoeba. So that means simple है कि there is no involvement of two parents, that is only involvement of one parents. Okay, and particularly here एक न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और न्यूक्लियस से क्या बना, तो दैट इज अ टू बॉडी. ओके, तो दैट्स मीन्स टू डॉटर सेल आर हियर फॉर्म. ओके, हाउ मेनी? टू डॉटर cell are here formed, and this type of fission it is called as the binary fission, and binary fission it is seen in that is a amoeba and particularly paramecium. Okay, also so many types, that means particularly second it is a type of that is a budding. Okay, I tell you that is a budding, that means particularly here exactly how to that means exactly how बडिंग पर्टिकुलरली कैसे बडिंग होगा वो देखेंगे अपन. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली सेकेंड इट इज अ बडिंग. ओके, बडिंग इट इज फाउंड इन पर्टिकुलरली दैट इज अ एग्जांपल मैं पहले लिख देता हूं, दैट इज अ ईस्ट. ओके, हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मीन्स समझ लो ये एक तरीके से ईस्ट है. ओके, और यहां पर ऐसा बर्ड आ रहा है, क्लियर है, इन दी ईस्ट. ओके, तो दैट्स मीन्स यही फिर फॉर्मेशन होके छोटा छोटा बन के यानी कि पर्टिकुलरली यही से पूरा एक स्टेज बना लेगा. क्लियर है, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली आई टेल यू वन थिंग, दैट्स मीन्स budding it is the it is occur in the that is the east. Okay, but एक शुगर समझ लो एक डिश लिया मैंने और उसके अंदर बहुत सारा शुगर सॉल्यूशन है और वहां मैंने ईस्ट डाला. क्लियर है, तो दैट्स मीन्स वो अपनी एक चेन फॉर्म कर देगा. क्लियर है, एक उसने अपनी चेन फॉर्म कर दिया, तो दैट्स मीन्स आल्सो कॉल्ड एज द सूडोमाइसेलियम. इट इज एग्जांपल ऑफ दैट इज अ सूडोमाइसेलियम, एंड तुम्हारे बोर्ड की बुक उसके बारे में बोलती है. क्लियर है, ईस्ट वगैरह दैट इज अ ईस्ट में बडिंग वगैरह होती है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली देखेंगे तो दैट्स मीन्स यहां से एक चेन मिल रही है अपने को. ओके, पहले तो बडिंग इट इज फाउंड इन पर्टिकुलरली दैट इज एग्जांपल ईस्ट. ओके, एंड आल्सो चेन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो दैट इज एग्जांपल दैट इज अ pseudomycelium. Okay, that is a pseudomycelium, very important because here yeast pseudomycelium एक तरीके से that is a yeast है. Okay, so this is two types, that is a binary fission and budding. Okay, now start with that is a third mode of asexual reproduction. It is a sporogenesis, that means formation of spore. Okay, because here very important, zoospore particularly it is found in or a particularly that means particularly algae. Okay, that is the algae. Also here algae, that means also some aquatic fungus. Okay, it is particularly एक्वेटिक फंगाई और अल्गी देयर आर फॉर्म, दैट इज यहाँ पर माइटोसिस होगा और पर्टिकुलरली माइटोसिस होने के बाद दैट इज अ जूस्पोर. ओके, बनेगा तो दैट यानी कि जूस्पोर है और जूस्पोर कहाँ मिलेगा, तो अल्गी में मिलेगा और एक्वेटिक फंगस में. ओके, तो दिस जूस्पोर पर्टिकुलरली इट इज पर्टिकुलरली formation of new species. Okay, or a new progeny like algae, like aquatic fungi. Okay, second it is a conidia. Okay, conidia means particularly एक को मैं कह रहा हूं that is a conodiophore. Okay, this is a conodiophore and particularly formation of इसके ऊपर छोटे छोटे मुझको branches मिलेंगी. Okay, it is also that is a formation of conodia, very important. So this is called as the conodia. Okay, so this is also asexual type of reproduction. It is a sporogenesis. Here this is an example, this is a conodia. It is a particularly example in the in which plant, that is a in which particularly fungi. Okay, so that means here penicillin.
वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन, यहाँ पर क्या मिलेगा तुम लोगों को, कोनेडिया का फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, कोनेडिया से ही उसके अंदर एबिलिटी होगी प्रोजेनी बनाने के। ओके, और जूस्पोर किस में मिलेगा, दैट इज अ अल्गी और अ एक्वेटिक फंजाई। ओके, तो दिस इज अ थर्ड mode of asexual reproduction. Okay, some specialized structure also are present, that is a some, I'll draw here some specialized, okay, some specialized structure also, that means particularly, structure means particularly, example bud. Okay, अभी here bud formation वहीं से एक बनेगा, यानी कि कोई भी organism बनेगा, but you know the example of that is a hydra. Okay, एक हाइड्रा है, क्लियर है, हाइड्रा के अंदर दैट इज अ हाइड्रा है और उसका स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, दिस इज अ हाइड्रा। ओके, और यही से तुम लोगों को मिलेगा एक दैट इज अ बडिंग। ओके, और यही से एक टोटल, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी होंगी कि एक पूरा प्रोजेनी बनाए, यानी कि खुद के जैसे दिखने वाला वो एनिमल बनाए। ओके, तो दिस इज अ सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ बडिंग सीन इन पर्टिकुलरली हाइड्रा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द बर्ड। ओके, और ये बर्ड से ही पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनेगा। देन पर्टिकुलरली ये बर्ड के बाद दैट इज अ जेम्यूल। ओके, जेम्यूल also it is a asexual reproduction होगा, that is a asexual reproduction होगा, और this type of asexual reproduction seen in that is a porifera, it is a phylum. ओके, और पोरीफेरा में ये अपने को जो भी मिलेगा जेम्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर मिलेगा। ओके, देन पोरीफेरा में भी जो एनिमल्स आएंगे दैट इज कॉल्ड एज द स्पॉन्जेस। ओके, तो हियर दैट इज अ जेम्यूल फॉर्मेशन। देन पर्टिकुलरली फिलामेंटस अल्गी। ओके, दैट इज अ एक मिलेगा दैट इज अ फ्रैगमेंटेशन। ओके, इट इज सीन इन पर्टिकुलरली फिलामेंटस अल्गी। ओके, इट इज सीन इन दैट इज अ फिलामेंटस algae. So that means this is also some specialized structure, that is the one is budding, second is gemule, and third is a fragmentation. Fragmentation also seen in that is a Spirogyra. You know the Spirogyra, you know about the particularly what is Spirogyra. Spirogyra also that is an animal, and they are also seen that is a fragmentation type of reproduction. Okay, तो दिस इज स्पोरोजेनेसिस के बाद मैंने सम स्ट्रक्चर्स बताया, सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो एनिमल में भी होता है। ओके, बिकॉज योर एनसीईआरटी सेज पर्टिकुलरली some part of zoology reproduction in organism include some part of zoology and some part of botany, and particularly unit name it is a that is a reproduction in organism. So that is the particularly it is some specialized structure. Okay, some specialized structure. Also that is a mode of asexual reproduction, that is the next, it is vegetative propagation. Vegetative propagation, it is two types, that is a natural vegetative propagation and particularly artificial vegetative propagation. Here that is the one diagram here, that means particularly some leaf are here present, node, and that is the root. Okay, so that means one एक जगह से दूसरे नोड को पकड़ के रखा है, that means particularly एक this is a leaf or this is a leaf. एक तरीके से natural vegetative propagation seen in that is a grass. Okay, also you know that is a ginger. ओके, वहां पर भी मिलेगा, और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द रनर. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज अ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं अपन, क्लियर है, बट हियर दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज सीन इन ग्रास. First example, according to that is a NCERT. This is part of the that is a NCERT or a CBSC. Water has hyacinth, that means particularly it is also called as the terror, that is a terror of Bengal. Very important, that is also called as the terror of Bengal, because that is a hyacinth, it is a इनवेसिव वीड, बाहर से आया हुआ दैट इज अ वीड है, ये क्लियर है, बाहर से आया है, क्लियर है. देन पर्टिकुलरली इट इज ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर, ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर. ये कहाँ बढ़ेगा, तो दैट इज अ स्टैंडिंग वाटर जहां पर है वहां पर बढ़ेगा ये. ओके, ग्रोइंग इन द दैट इज अ ग्रो इन द स्टैंडिंग वाटर
increase, that is a biological oxygen demand. ओके, दैट्स मीन्स वो वाटर से जितना भी ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, ले लेगा. ओके, वहां पर फिर क्या होगा, डिक्रीज ऑफ, दैट इज अ डिसॉल्व ऑक्सीजन. ओके, डिक्रीज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वहां की जो भी फिशेस है वो मरेगी. क्लियर है. तो इट इज वेरी हार्मफुल ऑफ द फिशेस. देन पर्टिकुलरली इट इज ऑल्सो नोन एज द, दैट इज अ exotic species. Okay, so this is all about the this is particularly one, it is a natural vegetative propagation. Okay, natural vegetative reproduction, it is also type of mode of asexual reproduction, and this is very important. It is one example I'll give you, that is a grass. ओके, ये कहाँ मिल रहा है, तो दैट इज अ रनर. ओके, और कहाँ मिलेगा, तो दैट इज अ ग्रास में. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट इज टू टाइप्स. आई विल राइट हियर, दैट्स मीन्स natural vegetative propagation and artificial propagation. Okay, now study with, that is first, that is a natural vegetative propagation. और अपन यही से अभी आगे जाएंगे, यानी कि यही से पूरा फर्स्ट स्टडी करेंगे पूरा, दैट इज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में. Now we will discuss about in the last class, that is a natural vegetative propagation, or simply natural vegetative propagation is a type of, that is a vegetative propagation, because there are two types, one is natural and another is, that is a artificial vegetative propagation. Okay, now I will talk about the particularly, that is a natural vegetative propagation. I will give you one example about the, that is a Bengal of terror, and also called as the hyacinth. Okay, that is a water hyacinth, very important. Then particularly also it is a part of, that is a NCRT, because CBSE में ये पूछा जाता है. Okay, in the, that is a HSC board, that means very important. One terminology that is very important according to government textbook, or that is a HSC board. There are present one, that is a part that is called as the propagule. Very important, that is a propagule. Okay, this is called as the propagule, that is a very important propagule. That means particularly what is exactly propagule. Okay, propagule means that is a growing plant. Okay, that is a growing, एक तरीके से वो ग्रोइंग क्या है, पर्टिकुलरली पार्ट है, जो भी पर्टिकुलरली जो भी जहां पर रहेगा, यानी कि जिस भी पार्ट में रहेगा वो जिस भी प्लांट पे रहेगा वहां का एक पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपैगल अकॉर्डिंग टू, दैट इज अ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ग्रोइंग पार्ट है, मीन्स पर्टिकुलरली देयर आर सम स्टोरेज होगा. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अनफेवरेबल कंडीशन है, देयर आर ऑकर अनफेवरेबल कंडीशन है, और वहां पर स्टोरेज होके रखेगा वो, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी उसमें वो प्रोपैगेट हो जाएगा. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस ग्रोइंग पार्ट आल्सो कन्वर्ट इनटू द लाइक स्टेम, फ्लावर. ओके, स्टेम, फ्लावर एंड पर्टिकुलरली that is a fruit, as well as that is a fruit. ये fruit में भी convert हो सकता है. तो that means very important here. In the particularly they also ये birds में भी develop हो सकता है, और यहाँ पर fruit बना है, तो that means seed का development, very important, and particularly occurring, that is a sexual reproduction here. So this is part, that is a very important one terminology is present in the government textbook, that is a, what is exactly propagule. Propagule means that is a growing point, और a growing part भी बोल सकते हो आप, और इसको ही growing point भी बोल सकते हो. that is a unfavorable condition में स्टोरेज होके रखेगा, then unfavorable condition आएगी, that means favorable condition होगी तब वो प्रोपोगेट करेगा. पहले अनफेवरेबल कंडीशन में स्टोरेज होके रहेगा मटेरियल वहां पर जो भी है, देन फेवरेबल कंडीशन आएगी तब जाके वो प्रोपैगेट होगा. तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपैग्यूल. नेक्स्ट दैट इज स्टार्ट विद, दैट इज अ ट्यूबरस रूट. ओके, here it is a part of also, that is a natural vegetative propagation. Very important here, that is called as the tuberous, that is a tuberous root. Okay, tuberous root there are two types. Okay, particularly tuberous root growing underground,
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरग्राउंड में क्या हो जाएंगे, दैट इज अ डेवलप. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर tuberous root are there are two types. Okay, one is called as the simple tuberous root. Okay, and another that is very important, another called as the cluster tuberous root. Okay, that is a cluster tuberous root. Okay, very important. There are also this type of tuberous root called as the fasciculated tuberous root. Okay, that is the fasciculated, also बोल सकते हो तुम लोग, that is a fasciculated tuberous root. That means cluster of tuber are there present. It is also part of the, that is natural vegetative propagation. Very important here. I'll draw here one diagram, and this diagram very important because it is a exact which type of, that is a part, or a which type of, that is a plant shows the particularly tuberous, and that is a cluster tuberous root. Okay, or a simple or cluster tuberous root. Here I'll draw here one, that is a runner. This is a runner. I tell you about the runner, what is exactly runner. Okay, then particularly here this is particularly one branch. Okay, this is a node. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ये एक नोड बन गया है, क्लियर है. दिस इज कॉल्ड एज द नोड, एंड देन पर्टिकुलरली इट इज ग्रोइंग इनटू द ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज अ वन ट्यूबर आर देयर फॉर्म. ओके, और दिस इज अ सिंपल बिकॉज दिस इज, इट इज अ स्टेम. क्लियर है, दैट इज अ स्टेम मीन्स एक ही इसमें इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, दैट इज अ नोड से. वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली सिंपल ट्यूबरस रूट, एक ही स्टेम, यानी कि पर्टिकुलरली एक ही अपने को क्या मिल रहा है, दैट इज अ ट्यूबर. और ये ऐसा एग्जांपल मिलता है अपने को, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्वीट पोटैटो. That is a sweet potato, and sweet potato also called as the, in the scientific name, that is a Ipomoea batatas or a batatas. That means particularly it is a sweet potato. अपने को दिखेगा जिसके अंदर सिंपल ट्यूबरस रूट होता है. क्लियर है. और इसका ओरिजिन कहां से, तो दैट इज अ नोड से. इट इज अ एग्जांपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स, दैट्स मीन्स sweet potato. Okay, or it is very important, that is Ipomoea batatas. Okay, then that is a second example. This is a simple tuberous root. Then particularly that is a second, इसमें अपन देखेंगे particularly this is a runner. Okay, this is runner, and particularly here a lot of there are. Okay, I'll draw here some first, then talk about the particularly cluster tuberous. Here some are the like this base are present, and particularly यही एक से यहाँ पर बनेगा, that is a एक ये बनेगा, देन पर्टिकुलरली एक लाइक दिस ऐसे बनेगा, देन पर्टिकुलरली यही से कुछ ऐसा एक ट्यूबरस बनेगा. तो दैट्स मीन्स हियर वेराइटी. Okay, here it is not variety, but exactly there are the cluster of tuberous root. Okay, यानी कि एक ही इससे यही बेस से क्या बन रहा है, पर्टिकुलरली इसका ओरिजिन कहां से, दैट इज अ बेस. ओके, बेस से इसका ओरिजिन हो रहा है. ये कहीं तो भी दैट इज अ स्टेम रहेगा ऊपर में, दैट इज अ स्टेम रहेगा, और यही से बेस से इसका क्या है, दैट इज अ ओरिजिन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और दैट इज अ सिंपल में ओरिजिन कहा था, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां से, हियर दैट इज अ नोड. ओके, तो ओरिजिन दैट इज अ नोड से थी. कहने का मतलब यही है यहाँ कि ट्यूबरस रूट देयर आर अंडरग्राउंड. ओके, फॉर्म कौन से फॉर्म में वो फॉर्म होता है, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वन इज सिंपल ट्यूबरस रूट, दैट्स मीन्स एक ही लगेगा. क्लियर है. अंडरग्राउंड जो भी रहेगा ट्यूबरस रूट, एग्जांपल लिया अपन ने स्वीट पोटैटो, और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ओके, देन पर्टिकुलरली हियर स्टेम है और यहाँ बेस है, लेकिन क्लस्टर ट्यूबरस रूट में अपने को कहां से ओरिजिन मिल रहा है, उसका बेस से मिल रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MHTCT. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द HSC. इट इज एग्जाम्पल ऑल्सो आस्किंग यू, दैट इज MCQ. ओके, आस्किंग यू इन MCQ. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक ही इससे बहुत ज्यादा क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ट्यूबरस रूट बन रहे हैं. और एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज द एस्पैरागस अकॉर्डिंग टू योर बुक.
okay, and also that is a dahlia, very important, that is a dahlia. So it is just example of, particularly it is an example of the, it is an example of the cluster tuberous root. So that means particularly it is two types and they show also natural vegetative propagation. Okay, here there are very important tuberous root. There are two types. Okay, it is a simple or that is a cluster. Okay, but also that is a two types, very important. One is that is a fleshy, okay, and another is that is a non-fleshy. Okay, fleshy means their part is swollen, also one is simple, okay, and another it is that is a cluster tuberous root. Okay, so that is a cluster tuberous root, very important. और यहाँ पर that simple. Here example I will tell you, that is the first non fleshy means वो सोलन नहीं होगा, और that is a fleshy means वो क्या होगा, एक तरीके से सोलन, because there are a lot of food material are present. Okay, तो simple इसके एग्जाम्पल अपन ने देखा, दैट इज आइपोमिया बटाटस, ओके, और अ स्वीट पोटैटो, उसमें दैट इज एस्पेरेगस एंड दैट इज अ डायलिया. ओके, हियर नॉन फ्लेशी में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूट्स ऑफ दैट इज अ गवाया, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फर्स्ट नॉन फ्लेशी में दैट इज अ रूट्स ऑफ गुआया, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, गुआया, देन पर्टिकुलरली then particularly also that is a Dalbergia. Okay, that is a Dalbergia, very important. Then particularly also known as the Dalbergia, also known as the that is a शीशव, that is a शीशव प्लांट भी कहा जाता है, यानी कि एक प्लांट होता है that is a शीशव, उसमें आपको नॉन फ्लेशी रूट्स मिलेंगे. Okay, then particularly also that is a albigenea, that is a called as the albigia, that is a albigia, and particularly that is the second, it is called as the muraiya, that is, you know the about the muraiya, that is तुम लोगों ने खाया भी होगा उसको, that is called as the कड़ी पत्ता. So that is very important. So that means particularly according to that is a tuberous root. Tuberous root के बारे में that is इतना है कि it is a part of that is a natural vegetative propagation. There are two parts. One is fleshy. Fleshy है एक तरीके से that is a swelling वाला है, ठीक है, और a swollen part है और a swelling वाला part है. और then non fleshy, okay, non fleshy वाला that means particularly वो यहाँ पर वो स्वेलिंग नहीं है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली ट्यूबरस रूट. ओके, देयर आर टू टाइप्स एंड अनदर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द पर्टिकुलरली ट्यूबरस रूट. Okay, now that is a one also I will tell you, that is one example. It is not example exactly, but what about the particularly that is the adventitious bird. Okay, that is a how to favorable condition he is sprout. Okay, that means वो अंकुरित कैसे होता है, that means particularly कि एक condition के अंदर, that is called as the particularly unfavorable condition. The favorable condition, this is समझ लो एक ये that is a बर्ड आर दैट इज अ डेवलप इन द पर्टिकुलरली लीफ के ऊपर एक आधी बर्ड डेवलपमेंट हो रहा है या एक आधी प्लांट के ऊपर वो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं. क्लियर है? दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये एक सरफेस पे हो रहा है बर्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज द अपाइकल बर्ड. Okay, this is called as the apical bird, also called as the adventitious bird. Very important, that is the adventitious bird. That means it is a sprout in the favorable condition. वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब हो सकता है, दैट इज बर्ड जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तभी वो स्प्राउट हो सकता है. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वो अंकुरित हो सकता है वहां पर. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली देन दिस पर्टिकुलरली आई विल टेल यू हियर, दिस बर्ड डेवलप इनटू दी पर्टिकुलरली, वो अपने खुद लीफ बनाएगा, समझ लो लीफ है, देन पर्टिकुलरली दैट इज यहाँ से कुछ रूट बना लेगा अपना. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स इट इज कॉल्ड एज द लीफी. Okay, this is called as the leafy shoots. Okay, and this leafy shoot called as the slips according to government textbook. उसको क्या कहा गया? That is the slips. That means एक adventitious bird favorable condition में sprout होगा. जब वो sprout हुआ तो उसने क्या बना लिया? That is the leafy shoots. Okay, उसका development होगा. I'll draw here. That means इसको मैंने बड़ा बनाया और उसको क्या बोला जाता है? That is the slip.
also it is a part of that is a natural vegetative propagation. That means particularly this particularly adventitious bud, okay, this adventitious bud develop into the produce new particularly new leaf or a new roots are produced, very important. Okay, so this is all about the that is the adventitious bud. Okay, also that is a part of that is part of the ट्यूबरस रूट, ओके, और ट्यूबरस के अंदर ही एक बर्ड्स होता, यानी कि ट्यूबरस के अंदर ही अपन देख रहे ये कि कैसे यानी कि बर्ड होगा तो वो बर्ड का डेवलपमेंट कैसे होगा. ओके, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आई विल टेल यू फर्स्ट दैट इज एडवेंटिशियस रूट के बारे में मैंने बता दिया आपको. अभी मैं आपको बताऊंगा दैट इज पर्टिकुलरली अबाउट द स्टेम ट्यूबर. ओके, हियर मैं इसका एक एग्जांपल भी दे सकता हूं, दैट इज एक एग्जांपल अपन दे ही देते फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज द सोलैनम. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सोलैनम ट्यूबरोसम. ओके, दैट इज अ सोलैनम ट्यूबरोसम. ओके, और यू नो द अबाउट दैट इज अ पोटैटो. इसको क्या कहा जाता है? दैट इज अ पोटैटो. सोलैनम इट इज अ जेनेरिक नेम and that is a tuberosum, it is a particularly specific epithet. very important, plant में क्या use करोगे? specific epithet. okay, और particularly in the zoological name you also call first name that is a generic name and another it is a specific name. but you know the about the that is a in botany that is no that is solanum, it is a generic name, and particularly tuberosum, it is a specific epithet. very important. okay, so this is a it is a binomial nomenclature of the potato. this is एक name है that is a potato का binomial nomenclature में देखते हैं अपन इसको. stem tuber अभी बात करते हैं that is a stem tuber की. here that means particularly समझ लो ऊपर में एक plant है, clear है, और that is a leaves बने हैं ऊपर में. ओके, एंड पर्टिकुलरली ये उसका स्टेम है और यही स्टेम अंदर से मॉडिफिकेशन होके टर्मिनल एंड पे जाके एक तरीके से सोलन हो जाए. ओके, एंड इनटू डेवलपमेंट इनटू दी पोटैटो. क्लियर है? दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली स्टेम अंडरग्राउंड में जाएगा और यही क्या हो जाएगा आगे जाके, दैट इज अ ग्रो. ओके, टर्मिनल पोजीशन से, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ टर्मिनल पोजीशन से वो क्या होगा, दैट इज अ ग्रो. दे वेरी इंपॉर्टेंट here, that means particularly you know the potato, this is समझ लो, this is one is potato, or here something to present and you know the about the that is called as the node. okay, and also this is eye of the particularly potato, also known as the that is a eye. but here very important, this is structure, this structure यानी कि ये यहाँ पर तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द एडवेंटिशियस बर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ भी एडवेंटिशियस बर्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा. ओके, यहाँ जो भी होंगे दैट इज अ एक्सिस है तो दैट इज अ एक्सिलरी बर्ड आर डेवलपमेंट. ओके, आई हियर दिस इज कॉल्ड एज द, मैं इसको बोलता हूँ दैट इज अ नोड. वेरी इंपॉर्टेंट, नोड पर्टिकुलरली ये नोड को अपन देखते हैं, दैट्स मींस पर्टिकुलरली समझ लो दिस इज अ नोड है. ये नोड में तुम लोगों को सम्स बर्ड्स दिखेंगे. ओके, यानी कि दे आर ग्रोइंग. ओके, कंटिन्यूअसली दे आर ग्रोइंग, बट सम बर्ड्स आर ग्रोइंग एंड सम बर्ड्स आर सप्रेस, क्योंकि वो एक दूसरे को सप्रेस करेंगे और पर्टिकुलरली कुछ बर्ड का क्या हो जाएगा वहां पर डेवलपमेंट हो जाएगा और कुछ बर्ड का वहां वो खुद को सप्रेस कर लेंगे. तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो पर्टिकुलरली यहाँ पर स्कैली लीव्स बनेंगे और दैट इज अ एक्सिलरी बर्ड. ओके, तो ये एक बर्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी बर्ड. ओके, एंड ऑल्सो ये जाके दैट इज यहाँ पर कुछ लीफ बनेंगे दैट इज कॉल्ड एज द स्कैली लीफ. वेरी इंपॉर्टेंट, together scaly leaves and particularly axillary bird together called as the eye. मैं इसको ही बोलता हूँ that is a eye. घर में तुम लोगों ने भी देखा होगा कि बरसात का सीजन है और सीजन में तुम लोगों ने उसको क्या कर दिया कि बहुत सारे पोटैटो खरीद के रख दिए. ठीक है, और वो पोटैटो के इसमें कुछ ऊपर से आई लग गया, यानी कि पर्टिकुलरली उसमें से कुछ बर्ड आ गया, दिस इज एक्सिलरी बर्ड. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वो नोट पे होता है. ठीक है, और अपन उसको बोलते हैं दैट इज अ आई. वेरी इंपॉर्टेंट ना. तो दैट्स मीन्स वो कैसे आता है, तो दैट्स मीन्स यही कि पर्टिकुलरली यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी, उसके अंदर ऑलरेडी स्टोरेज फूड मटेरियल है, तो उसको वो कंडीशन में पहले वो फेवरेट, यू नो द अबाउट द प्रोपैगुल के बारे में तुम लोग जानते हो.
अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, और फेवरेबल कंडीशन में वो क्या हो जाता है, दैट इज अ प्रोपैगोट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक नोड है, क्लियर है, और ये नोड को अपन ने अच्छे से देखा. तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड एंड पर्टिकुलरली स्कैली लीफ का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टुगेदर कॉल्ड एज द आई. Very important. Okay, so this is an example of that is a stem tuber, and stem tuber also show the natural vegetative propagation and is a type of that is a asexual reproduction. Very important here, one more point, that means there is no development of adventitious bird. Here there is no means particularly there is no development of adventitious, that is the adventitious bird. Very important, this point you remember, and you have to remember particularly this point. There is no development of adventitious bird. Here development of that is a auxiliary bird, and this stem underground stem modified into bird. Which part? So that is a पार्ट पे वो सोलन बन रहा है, क्लियर है. एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्टेम ट्यूबर का है, दैट इज कॉल्ड एज द पोटैटो. दिस इज अ स्टेम. ओके, दिस इज अ स्टेम, और यही से उसका क्या हुआ है, दैट इज अ मॉडिफिकेशन. दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली स्टेम ट्यूबर, एंड स्टेम ट्यूबर इट इज पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और मैंने एक बात यहाँ पर बताई है आपको, वो कभी भूलना नहीं कि एक्सिलरी बर्ड यहाँ पर बहुत सारे होंगे, डेवलपमेंट होगा. सम आर डेवलप, यानी कि वहां से कुछ डेवलप हो जाएंगे और कुछ वहां पर सफरेस हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक वहां सब कुछ लिखा भी है अच्छे से. ओके, तो यू नो द अबाउट द स्टेम ट्यूबर. Okay, now that is a start with, that is next, that is also natural vegetative reproductions, natural vegetative propagations example, that is called as the third runner. Okay, you know that is the grass. तुम लोगों ने grass भी देखी होंगी, लेकिन उसको अच्छे से observe नहीं किया होगा तुम लोगों ने. Okay, there are the some connections between one grass to another grass. Okay, तो how, ये कैसे possible है वो देखते हैं. that is a runner means particularly समझ लो this is stem है. Okay, this is stem. ओके, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तरीके से इसके ऊपर में जो भी ग्रास लगेगी, दिस ग्रास मैं इसको बोलता हूं दैट इज कॉल्ड एज द क्राउन. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस, ये तो तुम लोग जानते हो, दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली रूट. ओके, दिस इज रूट एंड दिस इज पर्टिकुलरली क्राउन. ओके, ऑल्सो दिस पार्ट called as the node. Very important. Okay, and here present, that is this node यहाँ present मिलेगा तुम लोगों को. Very important, I'll draw here तुम लोगों को मिलेगा, that is called as the lower axillary bird. Very important. So that means इट इज जस्ट रनर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये ऐसे ग्रो करेगा. ऑल्सो हियर फॉर्मेशन ऑफ दैट इज अ लीफ. ओके, एंड दिस ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड एज द ऑल्सो क्राउन. इसको भी मैं क्राउन बोलूंगा. ऑल्सो कुछ पोजिशन पे जाके ऑल्सो इसका डेवलपमेंट होगा. दिस इज रूट. तो दैट इज इनको मैं कहता हूं दैट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली, इनको मैं बोल रहा हूं दैट इज अ लॉन्गर इंटरनोड. बिकॉज ये थोड़ा कैसे दैट इज अ लॉन्ग टाइप का है, तो दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्गर इंटरनोड. ओके, इनमें भी दैट इज आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलेगा. इफ सम पार्ट और अ सम वन, दैट इज अ वन पार्ट और अ वन एग्जैक्टली some part it is detached. Okay, detached means वो टूट गया तो डेवलप हो सकता है एज ए इंडिपेंडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समझ लो यहाँ से कट हो गया, क्लियर है, एंड देन डिटैच फ्रॉम द वन पार्ट एंड पर्टिकुलरली ही इज प्रोड्यूस as a he is grown as a independently. It is very important. So that means particularly here development of lower axillary bird. Okay, and after detaching also is grown as an independent. Also very important, he is developed as a clone, और एक तरीके से क्लोन डेवलप करेगा वो. Okay, that is a clones और a clone डेवलप करेगा. और you know the about the clone, that means particularly उसने वो डेवलप किया है
ओके उसने वो डेवलप किया है, तो दैट्स मीन्स सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर रहेगा वो, ओके यानी कि वो उसी के तरह होगा, क्लोन डेवलप हो जाएगा उसका एज ए इंडिपेंडेंट, ओके। इट इज अ लॉन्गर इंटरनोड है यहाँ पर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एग्जाम्पल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल ऑफ दैट इज अ रनर also called as that is a cynodon, okay, cynodon, and cynodon also called as the doob grass, okay, that is very important। इसको क्या कहा जाता है, that is a doob grass, okay। Cynodon also one more example that is called as the oxalis, also one example that is called as the oxalis भी है। तो this is a runner एग्जाम्पल ऑफ दैट इज अ रनर का है, किसका एग्जाम्पल है, दैट इज अ रनर का। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलरली नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द दैट इज अ रनर, ओके, इन द पर्टिकुलरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द रनर, ओके। नाउ दैट इज द फोर्थ नंबर, इट इज अ लीफ, ओके, दैट इज अ लीफ, यू नो अबाउट द ब्रायोफाइलम, ओके, दैट इज एग्जाम्पल मैं पहले लिख देता हूँ, दैट इज अ ब्रायोफाइलम, ओके। ऑल्सो दैट इज अ वन एग्जाम्पल, दैट इज अ कैलोंचे डेजर्ट, ओके, डेजर्ट जैसे यानी कि पर्टिकुलरली ये इसको हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डेवलपमेंट होगा, ओके, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी वहां पर, दैट इज अ सम एग्जाम्पल, दैट्स मीन्स ऐसे कुछ यानी कि ड्यूरिंग डे देयर स्टोमाटा इज क्लोज एंड ड्यूरिंग नाइट स्टोमाटा इज ओपन। अपन ने बात की है इसके बारे में, क्लियर है, दैट इज अ स्टोमाटा, व्हाट इज द स्टोमाटा इन द पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस यूनिट, ओके। तो दैट्स मीन्स कैलोंचे, दैट इज अ एग्जाम्पल, ओके, इट इज अ एग्जाम्पल। फर्स्ट इज दैट इज अ ब्रायोफाइलम, second it is calonche, and third it is called as the begonia, begonia, it is an example of that is a leaf, and particularly this type of leaf show the natural vegetative propagation, and natural vegetative propagation part of the asexual reproduction, that is a asexual reproduction. I'll draw here that is a diagram of the particularly bryophyllum leaf, okay, that is a very important, that means particularly I'll one draw here, that is a diagram of the bryophyllum leaf, okay। Here very important, that means particularly you know the about the this leaf, okay। In Hindi that is called as the pathar chitta, okay, pathar chitta उसको कहा जाता है। In Marathi that is called as the parnafuti, that is called all about the that is a bryophyllum leaf, and English में उसको कहा जाता है that is a bryophyllum, okay। तो दिस इज ऑल अबाउट दी, अपन ने देखा पर्टिकुलरली ये प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज दी पर्टिकुलरली ब्रायोफाइलम लीफ है एक तरीके से, ओके। हियर वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मीन्स ही शोज पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ लीफ शोज दी पर्टिकुलरली क्रीनेट मार्जिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके के मार्जिन है यहाँ पर, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली क्रीनेट मार्जिन, ये और ये मार्जिन पे ही यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बर्ड, ओके, यहाँ पर ही डेवलपमेंट होगा, और इसकी मार्जिन कैसे, दैट इज अ क्रीनेट मार्जिन, very important। margin also there are so many types of margins, like I will give some example about the margin। समझ लो that is a plant है एक, okay, और यहाँ पर that is a leaf आ रहा है, clear है। this is a smooth margin, this is called as the smooth margin, some plant have this type of margin, okay, so that is called as the smooth margin, okay। then also this is a plant, okay, and particularly here like this, इस तरीके से आ रहा है, क्लियर है, दैट इज like this, इस तरीके से आ रहा है, तो मैं इसको बोलता हूं दैट इज अ serrate margin। some plant have this type of margin, okay। and then particularly also I'll draw here one plant that is also like this, इस तरीके से मिलता है, क्लियर है, also leaf इस तरीके से मिलता है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज द डेंटेड मार्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्टिकुलरली दिस इज अ मार्जिन, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अपन ने बात किया था, इट इज अ क्रीनेट मार्जिन, क्रीनेट मार्जिन प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइलम लीफ, ऑन द ब्रायोफाइलम लीफ, दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर particularly their formation of the birds, okay, this type of bird also called as the that is a
this type of bird also called as the adventitious bird, very important, this is called as the adventitious bird. इसको क्या बोलोगे तुम लोग? adventitious bird. And also this bird called as the foliar birds भी बोलोगे इसको, ओके यानी कि foliar, that is a foliar bird भी बोलोगे. अभी इस बर्ड के अंदर एंटायर यहाँ से ही क्या बन सकता है? पूरा एक तरीके से पार्ट, यानी कि एक तरीके से पूरा लिप बन सकता है, ओके. देयर foliar bird, also one more terminology is there present, that is called as the epiphyllus, also called as the epiphyllus. अभी ये foliar bird को ही मैं क्या कहूँगा और adventitious bird को ही, that is called as the epiphyllus, very important, epiphyllus bird भी कहते हैं इसको, okay. Also that means particularly in some problem create here, that means particularly one more important कि मैं समझ लो डिटैच हो गया, ओके, डिटैच होके सॉइल पे भी गिर गया, क्लियर है, तो वहीं से वो खुद को डेवलपमेंट कर सकता है, ओके. इन दी ब्रायोफाइलम लीफ में व्हेन ही इज पुल डाउन, यानी कि समझ लो डाउन ऑन दी अर्थ, ठीक है, तो सॉइल में वगैरह गया तो वहां से भी इसका खुद का डेवलपमेंट हो सकता है. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. Now next start with, that is artificial vegetative propagation. It is very important also. Some agriculturist or some horticulturist, they develop some techniques, that is a new desired variety, that means particularly it is economically very important, okay. तो उन्होंने नई कुछ varieties बनाई हैं, that means using of the artificially method, okay. But it is also type of asexual method, because there are two types, na, natural vegetative reproduction, natural vegetative propagation, and particularly artificially vegetative propagation, okay. Now we talk about the particularly artificial vegetative propagation, okay. It is very economically very important, that means first technique here, that is called as the cutting, very important, and it is a very cheap and very easy method. It is simple and cheap. It is very simple and particularly cheap method, okay, very important. अभी कटिंग है मीन्स particularly समझ लो, that is one part है, एक that is a sugar cane, you know about the गन्ना, क्लियर है, that is a sugar cane है, क्लियर है, और यहाँ पर बहुत सारा नोड और that is internode are there present, okay. मैंने यहाँ से इसको कट किया, ओके. कट करने के बाद पर्टिकुलरली मैंने इसके पर्टिकुलरली जो भी रहेगा यहाँ पर रूट वगैरह रहेगा, क्लियर है, और पर्टिकुलरली मैंने उसको यहाँ पर दैट्स मीन्स उसको लगा दिया, क्लियर है. दैट इज एक पार्ट कट किया था और अभी उसको मैं दैट इज लगा रहा हूँ, ओके. हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मीन्स यहाँ पर लगाया जाता है दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, okay. इंडोल एसिटिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज दी ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन. एक तरीके से ये क्या है? दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली उसका डेवलपमेंट कराएगा वो, क्लियर है. और इसको पुट इनटू दी और पर्टिकुलरली डाला जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड के साथ, क्लियर है. हियर सम दैट इज एडवेंटिशियस रूट डेवलपमेंट होंगे और पर्टिकुलरली प्लांट की क्या होंगे? दैट इज अ ग्रोथ, ओके. तो दैट्स मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड यहाँ पर लगाया जाएगा, क्लियर है. और ये शूट के साथ ही है, पर्टिकुलरली इसको लगा के इसके ऊपर में दैट इज अ डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकता है. एक तरीके से एक पार्ट को कट करके उसमें इंडोल एसिडिक लगा के वहां पर कटिंग करके, यानी कि इसको कट किया जाएगा और पर्टिकुलरली यहाँ पर कुछ इंडोल एसिटिक एसिड लगाया जाएगा. इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, आर्टिफिशियली लगाया जाता है वो, और पर्टिकुलरली यही से न्यू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट होंगे. इट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज अ चीप मेथड, ओके. हियर पर्टिकुलरली also here development of that is a adventitious root development, इसके साथ उसको लगाया जाएगा. किसके साथ? तो that is a root के साथ, okay. Now next it is a also artificial vegetative propagation part. Second, it is called as the grafting, or that is a grafting. It is also very important technique, okay, and also it is made up of that is artificial, okay. How? I tell you first example about the, समझ लो दैट्स मीन्स अपने को कुछ नई वेराइटी है, ओके, और वो वेराइटी इन द फेवरेबल कंडीशन नहीं है उसके लिए और उसको ग्रो करना है,
इन दी पर्टिकुलरली समझ लो दूसरे फेवरेबल कंडीशंस में वो है और उसको मैंने समझ लो बाहर के कंट्री की और मैंने इंडिया में लाया उसको और उसको मुझको क्या करना है, उसको लगाना है। क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं उसको क्या करूंगा, पर्टिकुलरली लाऊंगा और लगाऊंगा तो ही इज नॉट ग्रोइंग properly because the Indian's condition it is not very helpful for the particularly this plant. Okay, तो that means वो plant किसी 2-3 दिन में या particularly 5 to 6 days में उसकी डेथ हो जाएगी। ये ना होने के लिए मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ, that is called as the grafting technique, and grafting technique it is a very useful for the that is a growing of plant. So many here very important। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट दैट इज समझ लो ये एक प्लांट है, क्लियर है, वो उसके रूट से, क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली यही से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ऑब्वियसली जो भी मैं प्लांट लाऊंगा, क्लियर है, उसको यहाँ पर मैं जो बाहर देश यानी कि बाहर कंट्री से लाऊंगा तो मैं उसको यहाँ पर क्या कर लूंगा, उसको ग्राफ्ट कर लूंगा। दिस पोर्शन कॉल्ड एज दी ग्राफ्ट किया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द सायन, मैं उसको ही बोल रहा हूँ, दैट इज अ ग्राफ्ट, और दिस इज पार्ट कॉल्ड एज द स्टॉक। Very important, you know that is a scion and particularly stalk. Okay, it is a indigenous plant। पहले इंडिया में ये इंडिया का प्लांट है, फिर मैं यहाँ से उसको कट करूंगा, फिर पर्टिकुलरली ये क्या होगा, पर्टिकुलरली यहाँ पर मैंने उसको ग्राफ्ट किया तो दैट्स मींस उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, दिस टेक्निक कॉल्ड एज द ग्राफ्टिंग टेक्निक। ओके, पर्टिकुलरली ये उसको रेजिस्ट कर पाएगा, यानी कि उसके पावर को रेजिस्ट कर पाएगा, फिर उसके अंदर दैट इज अ जाइलम फ्लोएम होगा, थ्रू दैट इज अ ट्रांसलोकेशन, वो उसको पूरा एक्सेप्ट कर लेगा और इंडिपेंडेंटली एज ए वो ग्रो करेगा। ओके, दिस टाइप ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड एज द ग्राफ्टिंग। जो ऊपर में मैंने ग्राफ्ट किया है दिस इज कॉल्ड एज द सायन, और ये स्टॉक है, एक तरीके से इंडिजीनियस प्लांट है, दैट्स मीन्स वो इंडिया का है, वो फेवरेबल कंडीशन में है, यानी कि उसके लिए जो भी सॉइल है, वाटर है, सम उसके अंदर मिनरल्स वगैरह जो भी रहेगा, ओके, वो सब कुछ उसके लिए क्या है, फेवरेबल है, फेवरेबल इन कंडीशन है। तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली इसके ऊपर में मैंने ग्राफ्ट कर दिया दूसरे प्लांट का। ठीक है, दैट इज आल्सो यू नो दैट इज अ रोज प्लांट, दैट इज उसके अंदर ये होता है। क्लियर है? अभी हियर ग्राफ्टिंग इट इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट प्लांट, it is not possible in particularly monocot plant, it is possible in particularly only dicot plant। ओके, ये कौन से प्लांट में यानी कि पॉसिबल है, तो डाइकॉट प्लांट में ही पॉसिबल है ग्राफ्टिंग टेक्निक। ओके, बिकॉज दे हैव cambion it is a vascular tissue, cambion it is very important, cambion it is a vascular tissue होता है, क्लियर है, बट monocot don't have particularly don't have that is a cambium। okay, तो दैट्स मीन्स वो सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ शो कौन करेगा, ओनली मोनोकॉट प्लांट। यू नो द अबाउट दैट इज अ बार्क वगैरह, ठीक है, उसके आजू बाजू में जो भी टिश्यू होते हैं वो निकाला जाता है, यानी कि उसी के साथ निकाला जाता है और यहाँ पर उसको ग्राफ्ट किया जाता है। तो दैट्स मीन्स इट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल टेक्निक एंड पर्टिकुलरली प्लांट ग्रोइंग एज ए